Hi friends, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to end your chapter number 5th from social science, that is movement towards independence. So let us begin our last session of chapter 5. Okay, bachcho? So students, now we will be starting your last 4 topics: achieving independence and partition of India, then Mountbatten Plan 1947 and partition of India, then Indian Independence Act, that is July 1947, and lastly India become independent and immediate problems after it. Of it. So let us begin your chapter and the last session, achieving independence and partition of India. Achieving independence and partition of India. The commanders of Indian National Army were arrested as prisoners of war and were accused of treason and put on trial. Vallabhbhai Desai and Jawaharlal Nehru pleaded their case. The whole country took keen interest in this case. When the British government inflicted them with punishment, there were protests against them in the entire country. So Vallabhbhai Desai and Jawaharlal Nehru started the final revolt against them, and British government inflicted them और उनको फिर जेल में भी डाला गया था. Okay. So bowing to populist opinion, the government had to withdraw the punishment. These events, and with the naval mutiny of Bombay 1946, the British realized their rule in India will no longer be tenable. So उनको पता चल गया कि अब प्रोटेस्ट हुआ, जेल में डाले हुए कैदी को निकालना पड़ा, तो उनको अब पता चल गया था कि उनका जो ड्यूरेशन है, जो फ्रीडम उनके पास है, वो अब ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं. ठीक है. सो दे हैव डिसाइडेड टू क्विट इंडिया एंड ऑन February 20, 1947 British government decided कि very soon they will leave India. On February 20th, 1947, Attlee, the Prime Minister of Britain, announced that the British government shall give all the powers to the government of India as per the Cabinet Mission formula and shall quit India by June 1948. So, ऐसा बोल ही दिया था, डिक्लेयर कर दिया था 20 फरवरी 1947 को कि सब कुछ खत्म करके हम लोग 1948 के एंड तक निकल जाएंगे. ठीक है. Thus, in a changed situation, Mountbatten was appointed as Viceroy in place of Lord Wavell. When he took charge of his post, communal riots had started in India. The condition of India had become pathetic. और जैसे ही वो आए, उनको पता है कि उस जमाने में there was no unity of Hindu, Muslim, and he started that communal riot during that season. और फिर क्या हुआ कि जैसे ही उनको पता चल गया कि ये कम्युनल राइट्स हुआ था, तो उन्होंने फिर डिमांड किया फॉर अ सेपरेट नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है. In July 1946, the Congress secured 201 seats out of 210 and Muslim League 73 seats out of 78 from provinces of India for the prior formation of the Constituent Assembly. The League pressurized the government for Pakistan on 16th August 1946. और मुस्लिम लीग ने ऐसा प्रेशर किया कि हमको एक सेपरेट नेशन चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान, और वेरी शॉर्ट टाइम में अगर इंडियन इंडिपेंडेंस या कोई भी इंडिपेंडेंस चाहता है तो देयर विल बी 2 सेपरेट नेशन, वन विल बी इंडिया, ठीक है, एंड अनदर इज पाकिस्तान. So terrible communal riots and tumult spread over India. Looking at the situation in India, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru and other Congress leaders felt there was no other alternative except accepting the demand of Muslim League for Pakistan, because Muslim League and Jinnah insisted for separate Pakistan. So, उनको पता था कि अब अगर हमको इंडिपेंडेंस चाहिए तो वी हैव टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ मुस्लिम लीग, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा बताया था और मुस्लिम लीग के लीडर्स ने कि वी नीड सेपरेट पाकिस्तान. तो अगर ऐसा हो रहा है और अगर इंडिपेंडेंस मिल रहा है तो ऑल ऑफ देम readily accept
to divide India into two separate nations. One is India, or you can say Hindustan, and another is Pakistan. The Muslim League boycotted the first cabinet meeting on December 9th, 1946. The Muslim League executive held on January 31st, 1947, decided to boycott the cabinet meeting and gave a rapid and extensive program for the demand of Pakistan. So, हर एक चीज के लिए जैसे ही कंस्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी तो आप लोगों ने देखा होगा ऑल द पार्टी लीडर्स साथ में बैठ के डिस्कशन करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग ने हर एक टाइम और एवरी टाइम वो जब भी कैबिनेट मीटिंग होती थी दे स्टार्टेड बॉयकॉटिंग इट एंड ओनली दे डिमांड व्हाट, अ सेपरेट नेशन दैट इज पाकिस्तान. Mountbatten convinced Nehru and Sardar Patel, who understood the matter, that having a well-organized central government having administrative units under the center shall be more peaceful and progressive instead of weak central government consisting of many autonomous and opposite constituents. National leaders found this argument acceptable. So, फिर उनको समझाया गया, माउंटबेटन ने समझाया गया कि एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट रखो, इंस्टेड अलग अलग पार्टीज जो है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वीक बना सकती है. इंस्टेड एक पावरफुल पार्टी रखो ताकि आप लोग पूरे देश को एडमिनिस्टर कर सको. और फिर जो नेशनल लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सेप्टेड दैट एंड फाइनली देयर वाज एन इंडिपेंडेंस इन 1947 August, and that is which is date 15th date. Okay. Sardar Patel and Nehru discussed this matter with Gandhiji, who also helplessly accepted arrangement of partition of India with heavy hearts. Mountbatten Plan 1947 and Partition of India. On March 24th, Viceroy Mountbatten presented his scheme. According to him, there was no alternative other than the partition of India. So, Mountbatten ने 1947 में डिक्लेयर कर दिया कि कहाँ से, मतलब वो जैसा बोलते हैं लाइन दोरी, ठीक है, तो वो एक बॉर्डर जैसा क्रिएट करने लगे, जिसकी वजह से आपका क्या होने लगा आफ्टर बॉर्डर. और ये पूरी मैटर समझने के बाद दे हैव डिसाइडेड कि माउंटबेटन ने जो भी प्लान बनाया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है एंड वी शुड सेपरेट टू नेशंस. अगर हमको इंडिपेंडेंस मिलती है तो हम लोग ये दो नेशंस को सेपरेट करने के लिए तैयार हैं. ओके. National and prolific leaders like Sardar Patel understood the matter. After many discussions and pondering, finally, on June 3rd, 1947, Viceroy Mountbatten decided to plan the partition of India. This plan is known as Mountbatten Plan. The Congress leaders and Muslim League accepted this plan. When Mountbatten Plan started getting implemented, the people of East Bengal and Sylhet province of Assam decided to join East Pakistan. So, पहले जो था ना, जो प्लान डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान के दो हिस्से हुए थे, एक वन इज वेस्ट पाकिस्तान एंड अनदर इज ईस्ट पाकिस्तान. तो जिसको हम अभी पाकिस्तान बोलते हैं वो वेस्ट पाकिस्तान है, और जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था. फिर पाकिस्तान में से बांग्लादेश सेपरेट हुआ इन 1971 जब इंदिरा गांधी जी अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे. ठीक है, तो इस तरह से ये डिवाइड हुआ गया था. Okay. West Bengal and East Bengal were affiliated with India as per decision of their assembly. West Punjab joined with Pakistan. It was decided to affiliate Northwest Province, Sindh and Balochistan with Pakistan. Indian Independence Act, July 1947. The British Parliament passed the Indian Independence Act according to Mountbatten Plan. So माउंटबेटन प्लान ने जो भी बनाया, ठीक है, वो पाकिस्तान वालों ने भी एक्सेप्ट किया, इंडियन लीडर्स ने भी एक्सेप्ट किया, एंड देयर वाज नो मोर राइट्स लाइक थिंक कि नहीं अब सेपरेट हो गए. हाँ, लेकिन राइट्स बहुत हुए थे. मुस्लिम लोगों को हिंदूज ने बहुत मारा, हिंदूज ने मुस्लिम को बहुत मारा, ऐसा बहुत चीज़ें हुई थी. लेकिन
एट दैट टाइम फाइनली ये बाउंड्रीज जो डिसाइड की गई थी वो दोनों पाकिस्तान के लीडर्स और इंडियन लीडर्स ने एक्सेप्ट कर ली थी. ओके. According to this, India's first Governor General was Mountbatten and Janab Jinnah was the Governor General of Pakistan. By this act, India's dependence on British rule came to an end. एंड देन माउंटबेटन इंडिया के गवर्नर जनरल बने, पाकिस्तान के जिन्ना, और इसी के साथ इंडियन इंडिपेंडेंस मतलब जो इंडिया डिपेंडेंट थी ऑन ब्रिटिशर्स वो कम टू एन एंड. अब इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड दे हैव देयर ओन कंस्टिट्यूएंट असेंबली, देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर ओन गवर्नमेंट, देयर ओन डोमिनियन स्टेटस, देयर ओन एडल्ट सफरेज. दैट्स व्हाई. Therefore, Gandhiji considers this act as the one and only best and beneficial act given by the Britishers to India. और गांधी जी ने ये क्यों बोला? क्योंकि उनको पता था कि अगर दो देश सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम कि वहां पे अब ब्रिटिशर्स का राज नहीं होगा. सो दैट वाज द ओनली बेनिफिशियल थिंग व्हिच ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव as India and Pakistan. But deep inside, both Indian leaders and some Indians as well as Pakistanis were deeply in trauma that two nations are separated. The last viceroy of the British government organized a function in New Delhi at the midnight of August 14th. The Union Jack of England was brought down from the pole and the Indian national flag tricolour was hoisted. The documents attributing independence to India were handed over by Mountbatten to C. Rajagopalachari, the first Governor General of independent India. ये भी याद रखना, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज सी राजगोपालाचारी which was handed by Lord Mountbatten. ठीक है. Entire atmosphere was full of excitement. Entire process of transfer of power was completed. August 15th, 1947 was an excellent dawn for India. Dawn here means morning. बहुत ही उत्साह के साथ लोगों ने खुशी सेलिब्रेट की थी, ढोल नगाड़े बजाए थे, रास्ते साफ किए थे, हर एक के घर पे तोरण लगाया गया था क्योंकि that was the first morning of independence. ठीक है. All celebrated the first Independence Festival very pleasantly and cheerfully in the entire country. Everywhere, people hung torans, a good omen, on doors. Sweets were distributed in schools. Many people who had taken vow felt relieved on its fulfillment, but Gandhiji was shocked due to the partition of India, and therefore he was deeply plunged into grief and drifted into meditation. और वो उनको इतना शॉक लगा था, इतने वो ट्रॉमा में चले गए थे कि उन्होंने अपने आप को एक रूम में लॉक करके या ये ट्रॉमा से निकलने के लिए ही स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन. ओके. लास्ट टॉपिक, India becoming independent and the immediate problems of it. India and Pakistan, two separate independent nations, came into existence as a result of Mountbatten Plan and Indian Independence Act 1947. The resolution to the following problems had to be found out. 1. Reorganization of military forces. 2. Disputes over assets and properties. 3. Debts and credits. 4. Problem and settlement of refugees. So, major जो concern था was कि जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो किसकी तरफ जाएगी, इंडियन की ओर या पाकिस्तान की ओर. फिर मॉनिटरी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल, क्योंकि वहाँ की करेंसी अलग, यहाँ की करेंसी अलग. The next thing is debts and credits. मतलब भारत ने अगर किसी से उधार लिया है तो वो चुकाएगा क्या, या मोहम्मद अली जिन्ना जी ने मतलब पाकिस्तान के लीडर्स ने किसी से कुछ क्रेडिट लिया है तो वो किसके और मतलब चुकाना पड़ेगा, कौन चुकाएगा, किस तरह से चुकाया जाएगा वो. एंड नेक्स्ट मेजर थिंग इज रेफ्यूजीज.
मतलब इंडियन लोग इंडिया में रहना चाहते हैं या कुछ लोग यहाँ नहीं वहाँ पे रहना चाहते हैं, ये सारे जो थे मेजर कंसर्न थे, स्पेशली आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। 5. Public services and the arrangement of civil servants and administrative staff. 6. Demarcation of international boundaries on eastern and western side of India to be fixed, etc. A 5-member committee consisting of 2 representatives each from India and Pakistan was formed under the chairmanship of Lord Mountbatten. The committee appointed different commissions consisting of experts of relevant subjects to solve all the problems. In case of any differences of opinion, both the nations admitted to accept the final decision given by an arbitrator. आर्बिट्रेटर जो बीच के आदमी होते हैं, वो मतलब न्यूट्रल पर्सन जो ना ही इंडिया की साइड लेंगे ना ही पाकिस्तान की साइड लेंगे। तो ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी? सबसे पहले तो बॉर्डर एलोकेशन का। बॉर्डर एलोकेशन इस तरह से हुआ था कि हर एक को अच्छे से मिले, क्योंकि ईस्ट साइड भी पाकिस्तान है और वेस्ट साइड भी पाकिस्तान है, तो दोनों को अच्छी तरह से बॉर्डर मिले। तो 2 इंडियन लीडर्स और 2 पाकिस्तान के लीडर्स दोनों क्या कर रहे थे? साथ में मिल के बात कर रहे थे। कहाँ जहाँ पे कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो वो समझ लेते थे, जहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट होता था तो जो आर्बिट्रेटर रहता है, जो बीच के न्यूट्रल इंसान होते हैं, अगर वो बोलेंगे कि ऐसा करना है तो बोथ इंडियंस एज वेल एज पाकिस्तान हैव टू एक्सेप्ट इट। Consisting of 1 representative of India and 1 of Pakistan, under the chairmanship of the former Chief Justice of India. So सुप्रीम कोर्ट के जो भी लीडर होंगे, मतलब जज होंगे, उनके सामने, ओके? Military Commandant General of India complied the partition of army military weapons, etc. The British Army left India by February 28, 1948. और मिलिट्री के वेपन्स के बारे में डिसीजन लेना पड़ा। और देन ब्रिटिश आर्मी जो थी वो इंडिया में रहती थी, वो उसने कब लेफ्ट किया? 28 फरवरी 1948 में, क्योंकि इंडियन आर्मी इज रेडी टू फाइट विथ एनी ऑफ अदर कंट्रीज, दैट्स व्हाट। All officers and employees of administration, military, judiciary were given opportunity to choose whether they would serve India or Pakistan. They were given assurance about their pay, allowance, security of service, pension, etc. और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उन लोगों को एक ऑप्शन दिया गया वेदर टू चूज टू वर्क विद इंडिया और पाकिस्तान, एंड moreover what they are given the relaxation of their salaries and pension schemes, everything, okay, so that उनको किसी भी नेशन के साथ चीट करने का मौका ना मिले और अपनी जो ईमानदारी से वो लोग जो काम कर रहे थे वो काम करते रहे। ठीक है? A large number of refugees from both countries migrated, leaving their houses and properties. India solved the tremendous problem of their rehabilitation and restoration very skillfully and patiently. The then Deputy Prime Minister and Home Minister, Sardar Vallabhbhai Patel, merged about 562 small and big princely states of India into Indian Union. So, फिर ये होने के बाद there were almost 562 states जिनका सरदार वल्लभ भाई जी ने बातचीत करते, नेगोशिएशन करके एक पूरा इंडियन यूनियन बनाया, जो हम लोग 7th चैप्टर में देखेंगे। ठीक है? Sardar Vallabhbhai Patel's strong determination, iron will, and diplomatic negotiations solved the problems. Yet, long-term planning to find a solution to problems like effects of communal riots due to partition, the shock of Mahatma Gandhi's death to make independent India, self-reliant with the help of good governance, the weak condition of Indian agriculture, to create an atmosphere of peace and tranquility in the country, the internal-external security of the country, etc., became necessary.
सो इतना होने के बावजूद भी बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट का सब कुछ बाकी था, क्योंकि जो रेफ्यूजीज थे, ठीक है, दे वर स्टिल इन ट्रॉमा। फिर फेस्टिवल्स किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे उसका प्रॉब्लम, बॉर्डर सिक्योरिटी इंडोर एज वेल एज आउटडोर, मतलब इनसाइड सिक्योरिटी एज वेल एज आउटसाइड द सिक्योरिटी, वो सब का ख्याल करना। एग्रीकल्चर जो वीकन था उसको अच्छे से डेवलप करना, पीसफुली ये जो कम्युनल राइट्स हुए थे उसको पीसफुली कैसे हैंडल करना, ये सब चीज जो थी वो दिमाग में थी। और धीरे 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 वो स्टेप बाय स्टेप वो करते गए एंड फाइनली इंडिया बिकेम अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, एंड that's it, that's the end of our chapter number 5 from your social science textbook, that is movement towards independence. I am Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. Thank you very much. We will be meeting soon. Bye bye.